Today we are going to learn science, chapter number 11, grade 6, weather, rain, thunder and lightning. Learning objects. Going through the chapter, this student will be learn about. इस lesson में हम क्या क्या सीखेंगे? Now weather is determined by three factors: sunshine, movement of the air and water on earth. Three states of water. There in changes: melting, freezing, evaporation, condensation. Water cycle is the continuous change of earth liquid water into water vapor by evaporation and water vapor into liquid water by condensation. Transpiration. Precipitation means refer to be falling water drops to ice crystals from the cloud to the ground is called the precipitation. Water cycle purified water and lightning. Flash of brilliant light in the sky caused by the discharges of static electricity. Now thunder, the loud noise is the heard after a bolt of lightning. First one देखेंगे हम changes. Changing weather. The weather is going to be the simple question in the quite a few questions in one. It text will be a sky is be clear, cloudy, will return in rain or not, will the wind be gentle or strong, warm, cloudy and colder and thunder, lightning, etc. Parts of the weather, three set of the determined: the sunshine, the moving of water, then the water on the earth. थ्री स्टेट ऑफ वाटर. अब थ्री स्टेट कौन कौन से है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये आइस क्यूब है, वाटर वेपर हो रहा है और आइस क्यूब यहाँ पे फ्रीज किए हुए हैं. ये लिक्विड है, लिक्विड वाटर को गर्म करेंगे तो उसको वाटर वेपर बन जाएगा. वही वाटर वेपर हम कूल करेंगे तो लिक्विड होने का, लिक्विड बाद में फ्रीज करेंगे तो आइस क्यूब बनेंगे. और द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट वेदर is about water when it is liquid. The second statement is water about it is in the air, gas formed upon the boiling water is called steam. The third statement, water, solid water, ice which is the strange in its skin. Ice is not wet, only the melting become a liquid. Water is a substance and can exit all the three physical states: solid, liquid and gas under ordinary condition. तो यहाँ पे फिगर नंबर 11.3 में ये सब दिखाया है आपको. ये देखो यहाँ पे एक बाउल है, उसमें नीचे लिक्विड है वाटर, बीच में आइस क्यूब है, देन ऊपर ये ड्रॉपलेट्स होंगे छोटे छोटे इनविजिबल वाटर वेपर गैसेस है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजिंग इनटू स्टेट्स ऑफ वाटर. यहाँ पे देखो ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका वाटर. नेक्स्ट वाटर को हीट करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे गैस बन जाएगा. वही स्टीम या गैस को कूल करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा फिर से वाटर. देन वाटर को फिर फ्रीजर कर देंगे तो उसका आइस क्यूब बन जाएगा. ये स्टेट 7 की फ्रीजिंग की, इवेपोरेशन की. कैसे देखो, व्हेन इज वार्म अप द चेंजिंग इनटू लिक्विड वाटर, दिस चेंज फ्रॉम द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग. वी से आइस मेल्ट इनटू वाटर. Next, eat water sufficiently cooled inside the refrigerator, it become ice. This change from the liquid to state, इसको बोलते हैं freezing. And water is out of the open changes slowly into water vapor inside, does not fail into hot. It change liquid from the evaporation. Melting, freezing. Next देखेंगे boiling. और वही boiling कैसे करेंगे. These gases, water is called steam. Steam, unlike water vapor, feel very hot. They change from the liquid gas into the boiling. Next, when water vapor cooled, it become liquid water and change from the water vapor contains liquid is called condensation. Next हम देखेंगे यहाँ पे heating, change in the physical state. यहाँ पे एक्टिविटी है आपको. On boiling water change into the steam, cooling steam changing back into liquid. यहाँ पे वाटर को
हीट करोगे तो उससे स्टीम निकलती है, उसी स्टीम को हम वाटर में भर देंगे, वाटर ढक के बंद करेंगे उसको और रखेंगे तो उसमें साइड में उसको स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगे। हीट चेंजिंग इन द फिजिकल स्टेट, तो जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो हीट क्या करती है, चेंज देती है। सन हीट चेंजेस लिक्विड इनटू वाटर वेपर। नेक्स्ट वाटर साइकिल। अभी वाटर साइकिल देखो आप यहाँ पे, ये अर्थ का सरफेस है, सनराइज गिरने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का वेपर हो जाएगा। नेक्स्ट कूल हो जाएंगे ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वो ड्रॉपलेट्स की तरफ से कंडेंसेशन होगा, फिर से गिर जाएंगे ना ऑपोजिट साइड। द वाटर साइकिल is the continuous circulation of water between the earth surface and the atmosphere। ये कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे आप अर्थ इज फिक्स्ड पाथ, अर्थ का क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है, देन वेरियस फॉर्म सीज लैक्स रिवर्स एक्सेट्रा, देन हैव एटमॉस्फेयर वाटर इन इंटायर इज नॉट लॉक्ड। पूरे वाटर का जो है उसको हम लॉक नहीं कर सकते, सो खुला रहता है, तो उसको वाटर पर होकर वो एटमॉस्फेयर में जाके फिर कूलिंग होकर उसके आइस ड्रॉपलेट बन के फिर से अर्थ सरफेस पे गिरते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे हम evaporation of surface water is from water vapor from the rise high up into air, then condensation of water vapor in the air, liquid or solid water, and third one precipitation of the condensation water vapor is a rain और स्नो, और रेन और स्नो के रूप में वो फिर से गिर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू एयर। ये मूवमेंट सरफेस कैसे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये मूव्स द इनटू द एयर, एवापोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे आपको एक पहाड़ दिख रहा है, पेड़, और यहाँ पे देखो ये वाटर वेपर हो रहा है, इधर ऊपर वाटर वेपर हो जाए क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ना सन की धूप से उसको वाटर वेपर हो रहा है, क्लाउड ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ऊपर ये क्लाउड को वाटर वेपर से फिर गिर रहे हैं, मीन्स कैसे कंटिन्यू चलता रहता है। देन these occur mainly by evaporation and small extent from the transpiration. Evaporation of water, surface water, the hill of the sun turns upper layer of the water, sea, lakes and rivers into invisible water vapor. These evaporation surface water, the water vapor rise high into the air and become temperature. At any temperature, water will evaporate faster from the larger surface than from the smaller surface. So most of water vapor in the air comes water evaporating from the vast surface in the seas. Transpiration. Trees also send some water vapor into air by process called the transpiration. The water thus lost out by plants in regularly space. So all through the research of the water, you will find interesting. Now one hot summer one day, fully grown beech trees loses 300 to 400 liters of water by transpiration, and single acres grass releases 16 tons of the fully grown apple. It is added to nearly 90,000 liters of water from the water vapor. Condensation of water vapor in air. As water, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, condensation of water vapor from the cloud precipitation as a rain। ये क्लाउड है और ये रेन की तरफ से गिर रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये तो वाटर वेपर राइज इनटू द कोल्ड एयर, इट इज़ कोल्डेड, कंडेंस ऑन द अर्थ, सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक एंड साल्ट floating in air. The tiny water droplets from the condensation and the water vapor group together millions of them from cloud. Cloud is floating mass of tiny water droplets from the condensation of water vapor in air. So all moving causes cloudy draft above. Now next part हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।